चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट। ओके बेटा, पावर का फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, पी एवरेज इज इक्वल्स टू ERMS IRMS into cos. P average is equals to your ERMS into IRMS into your cos phi. Cos phi is known as power factor beta. Cos phi is known as what? Power factor. Okay. Okay. चल, अगर प्रॉब्लम्स के अंदर आपको वोल्टेज के बारे में कुछ भी ना दिया ना तो डायरेक्टली ऑलवेज टेक इट एज अ VRMS बेटा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ बेसिकली, if nothing is mentioned then take supply voltage as ERMS। ठीक है ना। सो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर डेफिनेशन होता है पावर फैक्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय cos phi। Cos phi is equals to R divided by Z. The ratio of resistance divided by impedance is known as of your power factor। क्लियर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, R by Z। Z is your impedance, R is your resistance। ठीक है, फर्स्ट वाला देख लीजिए। If I am talking about only capacitors, when AC is connected only to capacitor, यानी cos phi इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, 0। अगर cos phi 0 हो गया तो P एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, P एवरेज की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अगर ओनली AC is connected only to your inductor, only to your inductor, यानी cos phi will also be equal to how much for me, 0। पूछो क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस हम दोनों के बीच में कितनी होती है बेटा, 90। फाई की वैल्यू 90 होगी तो cos phi की वैल्यू 0 ही होगी ना। इसके लिए भी एवरेज पावर क्या हो जाएगा, P average will be equal to 0 if AC is connected only to resistor, only through resistor, cos phi की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर cos phi की वैल्यू 1 है तो P एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, P एवरेज विल बी इक्वल टू ERMS IRMS, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना। इतना याद रख लीजिए बेटा, ज्यादा डेरिवेशन के पीछे मत भागिए, वरना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता तो मैं आप लोग को खुद करवा देता। तो जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लीजिए, P एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS इनटू cos phi। cos phi को क्या बोलते हैं अपन, पावर फैक्टर। Power factor, if nothing is been mentioned then take this supply voltage as of your ERMS। cos phi का वैल्यू क्या है, R by Z। if it is connected only through capacitor, cos phi value 0, only through inductor, cos phi value 0, only through resistor, cos phi value is 1। so P average is 0 for the inductor and capacitor, whereas P average is maximum for your resistor part। अगर अब इन लोगों के combinations ले ले, like LR circuit, AC connected to your LR circuit, for LR circuit cos phi will be equal to R divided by Z ना बेटा। Z की वैल्यू कितनी होती है बेटा फॉर LR सर्किट, दैट इज अंडर रूट ऑफ योर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है ना। तो उसी तरह से if it is connected to your RC circuit, if it is connected to your RC circuit, cos phi is equals to your R divided by Z, so that is equals to your R divided by अंडर रूट ऑफ योर, ये बन गया मेरे पास R स्क्वायर प्लस ऑफ योर XC स्क्वायर। XL का फॉर्मूला क्या है बेटा, XL इज इक्वल्स टू L ओमेगा एंड XC इज इक्वल्स टू 1 by C ओमेगा। ठीक है। if it is connected to RC circuit,
RLC, और हम लोग क्या बोलते हैं LCR circuit. If it is connected to your LCR circuit, then power factor cos phi is equals to your R divided by Z. So that is equals to your R divided by Z की value हो गई under root of your, this value will become for me R square plus XL minus of your XC का whole square. Done बेटा. If AC is connected to LR circuit, if AC is connected to RC circuit, if AC is connected to LCR circuit, value of cos phi is equals to 0, इंडक्टर के लिए 0, रेसिस्टर के लिए मैक्सिमम. cos phi for LR circuit is equals to R divided by under root of R square plus XL. This value is this value for this part, and cos value is equals to your R divided by under root of your R square plus XL minus of your XC whole square. XL की वैल्यू क्या होती है बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 by C ओमेगा. यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? चल नेक्स्ट वन बेटा, ट्रांसफॉर्मर्स. ट्रांसफार्मर. What is a transformer beta? A device which is used to convert high AC voltage into low AC voltage is called as a what? Transformer. What is a transformer? Can you tell me what is a transformer beta? It is a device for converting high AC voltage into low AC voltage. Then or vice versa, लो को हाई में कन्वर्ट करने के लिए, और वाइस वर्सा. So what is a transformer? Transformer is a device which is used for converting high AC voltage into your low AC voltage, or vice versa is called as of your transformer. Done? ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? It works on the principle of, ये important है बेटा, works on principle of म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये अगर पूछा गया तो अब थियरी बिट के नीचे याद रख लीजिए. इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ट्रांसफार्मर होता कैसा है देखो बेटा, रफली आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं. हाँ बेटा, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. इंडक्टर जो है ना, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होगा, ऐसा कुछ सिंबल होगा. ये दो लैमिनेटेड कोर्स होते हैं ऐसा. तो यहाँ पर जो है ना, एक कॉइल होता है, ऐसा एक कॉइल बना दिया जाता है. रफली याद रख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, अब डेप्थ में जाके डेरिवेशंस मत बैठ लीजिए. एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट. ये दिस इज सिंबल ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट, isn't it? तो इसमें से करंट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर I1, या इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल भी बोलते हैं बेटा. सो आई रिप्रेजेंटेड बाय योर P, और इसका EMF हो गया E1, isn't it? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल. दिस इज योर प्राइमरी कॉइल जिसको AC कनेक्टेड है, ठीक है ना. और यहाँ पर जो है ना, देयर विल बी योर अनदर नंबर ऑफ कॉइल्स राइट नाउ लाइक दिस. This is connected to your some load. This is connected to your some load. इसके पास जो EMF आएगा that will be equal to E2, और इसमें जो करंट जाएगा that will be equal to your I2. ठीक है ना. अब ये पूरा लैमिनेटेड कोर होता है बेटा, ये अंदर से ऐसा ब्लैक भरा हुआ होता है, सो ज्यादा मत कर लीजिए. तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है, ये पूरा सा भरा हुआ होता है.
The two coils have been wounded in the same direction, but a soft iron core hota hai. This one is known as of your soft iron core, isn't it? The coil which is connected to the source is called as of what beta? Primary coil. And the other which has been connected to the load is called as of your secondary coil. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Secondary coil बोलते हैं. This is your secondary coil. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान के चलो NP है या नंबर ऑफ टर्न्स इसको N1 मान के चलो. This one are number of turns in the secondary बोलो और this one is N1 बोलो. This is EMF of primary बोलो या E1 बोलो, one in the same है. This is a primary of secondary बोलो और E2 बोलो, one in the same है. This is a current in secondary बोलो और IS2 बोलो एक सम है. और this one is current in IP बोलो और I1 बोलो, one in the same. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है? फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ टर्न्स. जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स रहेगा बेटा. जितना ज्यादा number of flux रहेगा, that will depend upon the number of your turns, is it? That means the flux in the secondary coil divided by flux of number of turns in the secondary coil will be equal to flux of the primary coil divided by number of turns of the primary coil. ठीक है ना? अगर मैं फ्लक्स को टाइम से डिफरेंशिएट करूं, so it is 1 by number of turns in the secondary coil into T flux of the secondary divided by dt is equals to this one will be equal to your 1 by n of your T number of turns in the primary coil into flux of the primary divided by dt. ठीक है ना? T5 by dx क्या होता है बेटा? Potential होता है, EMF. So this is the potential of the secondary coil divided by number of turns of the secondary coil is equals to potential of the primary coil divided by number of turns of the primary coil. इसको आप VP भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको आप VS भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पोटेंशियल को हम लोग E या V से रिप्रेजेंट करते हैं, so that will be the relation. यानी I can write here potential of the secondary coil divided by potential of the primary coil will be equal to number of turns of the secondary coil divided by number of turns of the primary coil. ये डायरेक्टली याद रख लो, that is more than enough for the competitive examination. पर ये for a transformer, potential of the secondary coil divided by potential of the primary coil is equals to number of turns of the secondary divided by number of turns of your primary. Done beta? Very important formula beta. या E1 E2 भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है बेसिकली. Done? Sure. If there is no power loss, ये वाला कंडीशन है बेटा एग्जाम के लिए. अगर कोई भी पावर लॉस ना हो, then I can say that potential of the secondary coil into current of the secondary coil will be equal to potential of the primary coil into current of the primary coil. पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर इज इक्वल्स टू V into I होता है ना. अगर पावर लॉस ही नहीं है तो पावर इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी इक्वल टू पावर इन द प्राइमरी कॉइल. कंडीशन मतलब I can write here Vs divided by Vp will be equal to your Ip divided by Is. Current in primary divided by current in the secondary. आई बात समझ में सभी को? ठीक है ना? So ultimately what I can write is right now, इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखूं basically, this is equation number 1, this is equation number 2. So from 192 I can write, from 192 I can write Vs divided by your Vp will be equal to your Ns divided by your Enp is equals to your Ip divided by your Is. S means secondary, P means primary बेटा. ये फॉर्मूला याद रख लीजिए बेटा. That will be more than enough for your competitive examinations. Done? Is it clear? Check. So tell me, transformer works on what principle beta? It works on the principle of your mutual inductance, which says that what is a transformer? Device which is used for converting high AC voltage to low AC voltage, and it works on the principle of mutual inductance. तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ टर्न्स.
So flux of the secondary coil divided by number of turns in the secondary coil will be equal to flux of the primary divided by NP. Isn't? अगर मैं फ्लक्स को टाइम से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, सो d5/dt क्या होता है बेटा? आप लोग यार मालूम है फैराडे सेकंड लॉ से, E is equals to d5/dt. सो इसलिए dx/dt को मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल ऑफ द सेकेंडरी, और d5/dt इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ द प्राइमरी, यानी Vs/Vp is equals to Ns/Np. अगर पावर लॉस नहीं है, इफ देयर इज नो पावर लॉस, then Vs into Is will be equal to Vp into Ip. तो Vs/Vp is equal to कितना आया? Ip/Is. तो दोनों को मिला के लिखा था. दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. Then चलिए, keep this one as a star mark बेटा, very important. Potential of the secondary is 180 degrees out of phase. 180 degrees out of phase with potential of primary. दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? तो पूछो तो क्या बोलेंगे? 180 डिग्रीज. ओके, अगर दोनों सेम है, Vp and Ip and Vs and Is, अगर दोनों भी सेम है, then they will be always in the same phase. तो ये कंडीशन लिख लीजिए, ये ऑलरेडी पूछ चुका है बहुत बार. If number of turns of the secondary is greater than number of turns of the primary, यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत है कंपेयर टू द प्राइमरी, तो जब ऐसे वाले कंडीशन में व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल बेटा? पोटेंशियल ऑफ योर सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द प्राइमरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. That means this will be what type of the potential relation beta? Step up transformer. This is called as what? Step up transformer. So what is that step up transformer? The step up transformer के लिए condition क्या होनी चाहिए? Secondary coils must be greater than primary coils. So potential of the secondary coils will be greater than of your potential of the primary coil. अगर potential of the secondary coil is greater than, तो what happened to the current in the primary beta? Current in the primary will be less. करंट इन द सेकेंडरी विल बी मोर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए बोल रहा हूं. ठीक है ना. अब इसका उल्टा, अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स आर लेसर देन, इफ ns is lesser than of your np, number of turns of the secondary coil is lesser than number of turns in the primary coil, that is potential of the secondary is lesser than potential of the primary. तो जब क्या हो जाएगा बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. It will be called as what? Step down transformer. So what do you mean by step up transformer or step down transformer? Done. So what is a step up transformer beta? Step up transformer के लिए potential of the secondary is greater than step under and number of turns of the secondary will be greater than primary. Step down transformer के लिए, step down मतलब current decrease हो रहा, number of turns in the secondary must be lesser than primary or potential in the secondary will be lesser than potential of the primary. ठीक है. अब बेटा आप लोग वर्क फॉर एनर्जी में पढ़े होंगे, तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका थ्रू आउट द फिजिक्स. एफिशिएंसी, यहां पर हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं. एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्क फॉर एनर्जी में जैसा आपने ट्रांसफर एफिशिएंसी निकाला है ना, वही फॉर्मूला यहां पर भी यूज कर रहे हो आप. एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, किसी को याद है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का सिंबल क्या होता है? ईटा. याद है किसी को? बताइए. Efficiency is always equals to your output power divided by input power. Output power divided by your input power. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट मतलब सेकेंडरी, पोटेंशियल ऑफ दिस सेकेंडरी इनटू करंट ऑफ दिस सेकेंडरी विल बी इक्वल टू योर पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी इनटू करंट ऑफ योर प्राइमरी. दिस विल बी द एफिशिएंसी फॉर्मूला. Neta is equals to output power divided by your input power. आउटपुट मतलब सेकेंडरी कॉइल, इनपुट मतलब प्राइमरी कॉइल. बस फॉर द फिजिक्स यही चलते रहेगा बेटा, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है. क्लियर है सभी को? एनी डाउट इनटू दिस वन एनीवन?
समझ में आ गया? चलिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू योर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एसी में इतना बेसिक नॉलेज काफी है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ योर नीट एंड एज वेल एज ऑफ योर जेई मेंस। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, ट्रांसफार्मर पे लिख रहा हूं मैं बेसिकली। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मान के चलो एक मिनट, हाँ, इन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, the input voltage is the input voltage is 22 kilowatt and the output voltage is 550 volt. ठीक है, the ratio of number of turns, the ratio of number of turns in secondary to that in primary is कितना होगा बताइए? इन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल रहा है बेटा। इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इनपुट वोल्टेज इज, इनपुट वोल्टेज मतलब क्या बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट वोल्टेज? मतलब V प्राइमरी इज 22 किलो वोल्ट एंड आउटपुट मतलब V secondary is equals to 550 volt. The ratio of number of turns of the secondary divided by number of turns of the primary कितना बोल के पूछ रहा हूं, करोगे? तो ये फॉर्मूला तो अपने को मालूम है, Vs डिवाइडेड बाय Vp will be equal to, यानी output voltage divided by input voltage will be equal to number of turns of secondary coil divided by number of turns of the primary coil. यानी number of turns of the secondary divided by number of turns of the primary will be equal to, but output potential कितना है बेटा? 550 divided by this will be 22 किलो मतलब 10 to the power of 3, so that will be equal to 550 divided by 22 into 10,000, यानी ये वाला चले गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा। 55 डिवाइडेड बाय 22 into 100 कितना आ रहा? डन, वेरी गुड। किलो है ना बेटा, 10 पावर -3 नहीं आएगा, 10 पावर 3 है। 1 किलो इज इक्वल्स टू 10 पावर 3। ठीक है, दिस 1/40 आ गया सभी को? No doubt to anyone in this one? चलो ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। ए ट्रांसफार्मर having efficiency of 90%, 90% is working on 200 volt, यानी इनपुट वोल्टेज है बेटा, and 3 kilowatt power। ठीक है, if the current in the secondary coil, if current in secondary coil
the current in the secondary coil is 6 amp. My question is find voltage across secondary coil. Find voltage across your secondary coil and current in primary coil. And current in primary coil. Current in your primary coil. ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार जल्दी से. A transformer is having an efficiency दे रखा है बेटा, यानी eta is given as 90%, यानी that will be equal to 90 divided by 100. efficiency दे रखा है and working of 220 volt मतलब क्या है? Potential of primary is 200 volt and power is given for me. The power input power will be equal to your 3 kilowatt. Input power matlab power of your primary coil. So I can get the current in the primary coil beta. Current in primary coil P is equals to V into I. So current in the primary coil will be equal to power divided by potential of the primary. Power का कितना वैल्यू है बेटा? 3 किलोवाट यानी 3000 divided by 200. ये वाला चले गया. So it is 300 divided by 2. 2 1 जा 2 15 जा. ये हो गया 15 amp. तो करंट थ्रू प्राइमरी तो आ गया 15 amp. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है बेटा? नीटा इज इक्वल्स टू योर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. तो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है? 90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, पूछिए आप बेटा प्रॉब्लम में, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी. वोल्टेज अक्रॉस या सेकेंडरी मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पर? Vs इंटू योर Is डिवाइडेड बाय पावर ऑफ प्राइमरी. प्राइमरी का पावर कितना दे रखा है बेटा? 3 किलोवाट यानी 3 इंटू 10 पावर 3. ठीक है, तो यहाँ 2 zeros, यहाँ पर एक चले जाएगा. सो इट इज 90 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी निकालना है इनटू करंट इन द सेकेंडरी. कितना दे रखा है? सेकेंडरी कॉइल में करंट इज 6 एम्पियर्स डिवाइडेड बाय 30. तो ये बन गया मेरे पास 90 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ द सेकेंडरी. कितना आ रहा है देखिए? Potential of the secondary will be equal to how much? Then 5 nines are 45, so 450 volt. Very good. So potential of the secondary will be equal to 450 volt. आ गया सभी को? एक बार देख लीजिए बेटा, ये ऑलरेडी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा. एक बार, a transformer is having efficiency and is working on 200 volt and 3 kilowatt power. If the current in the secondary coil is 6 ampere, find the voltage across the secondary coil. Then beta, क्वालिटी फैक्टर में एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, कल मैंने आप लोगों को करवाया था ये वाले में. रेजोनेंस सर्किट के अंदर ये जो डायग्राम होता है ना, तो यहाँ पर आप एक टर्म याद कर लीजिए. यहाँ पर जो करंट होता है दैट विल ऑलवेज बी योर आईआरएमएस करंट बेटा. ठीक है ना? और यहाँ पर इज ओमेगा. तो यहाँ पर एक पॉइंट पे जहां पर आईआरएमएस करंट इज बिकमिंग हाफ. ठीक है, ये तो मैक्स है, इज इट? सो अगर मैं यहाँ पर आईआरएमएस डिवाइडेड बाय √2 लिखूं तो ये तो पावर मैक्सिमम होगा. यहाँ पर P विल बी इक्वल टू मैक्सिमम. ये हो गया मेरे पास हाफ ऑफ योर P मैक्स. एट व्हाट फ्रीक्वेंसी बेटा? ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आर पार, इधर तरफ और उधर तरफ. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ. अगर प्रॉब्लम में डायरेक्टली आप लोग को बैंडविड्थ अगर पूछे तो बैंडविड्थ इज डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. दैट विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय L. कितना फॉर्मूला याद?
delta W is equals to omega 2 minus omega 1, that is equals to your R by L, that is known as what? Bandwidth. डायरेक्ट फॉर्मूला पे इसका है बेटा डायग्राम के हिसाब से, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दैट वन फॉर्मूला। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का तो वैसे भी हम लोग ने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, इजंट इट? क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ में भी लिखना चाह रहे थे, लिख सकते हैं बेटा। मान के चलो डेल्टा क्यू लिखना है मेरे को, डेल्टा क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ योर एलसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इनटू ये कितना बन गया एल बाय आर। ठीक है ना, क्योंकि आर बाय एल रहता ना तो एल ऊपर चले जाएगा। दिस वैल्यू विल बिकम हाउ मच बेटा 1 बाय आर, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू, दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मच 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ योर एलसी, दिस इज ऑल्सो योर क्वालिटी फैक्टर। क्लियर? कौन सा? डन बेटा, बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद रख लीजिए बेटा। एसी में स्पेशली अगर आपको और ज्यादा दिक्कत लग रही है तो थोड़ा ये क्वालिटी फैक्टर एक बार फॉर्मूला बेस याद रख लीजिए, और ट्रांसफार्मर के थोड़े रिलेशन याद रख लीजिए। अगर बाई लक अगर आप लोगों को ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ जाए तो बस ये 2-3 फॉर्मुलेस पे ही आएंगे और एफिशिएंसी पे आएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए पीवाईक्यूज निकाल के, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर यू। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? सो बाय दिस वी हैव ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटेड कंप्लीट एसी। अभी आप लोग को एक बार प्रैक्टिस करना है, एक बार मैं पूरे पीवाईक्यूज मैं आपको करवा दूं, सो देन विल ट्राई टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक। एक सेक्शन विल ट्राई टू कीप फॉर द पीवाईक्यूज बेटा, इसके ऊपर एक बार पीवाईक्यूज रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट होना है इसके लिए, तो ज्यादा मत टेंशन लीजिए। तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस अगर हो सका तो ट्राई टू डू इट आउट। ठीक है, खाली फॉर्मुले याद रखना है बेटा, पावर फैक्टर क्या है, फॉर्मुलेस एक्सेल का फॉर्मूला वगैरह वगैरह याद रख लीजिए बस। डन? मीटिंग इज गेटिंग एंड बेटा, आप लोग को कुछ बात करना है, किसी को कुछ करना है तो बोलिए। आफ्टर दिस विल बी स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक बेटा। सो आज एक बार पूरा आप एसी एक बार रिवीजन कर लीजिए, फॉर्मुले बेस्ड जितने भी मैंने मॉडल्स करवाए, और एक बार पीवाईक्यूज निकाल के पीवाईक्यूज खत्म कर लीजिए। मैंने पावर फैक्टर को डेरिवेशन एक स्किप किया है, ओनली रीजन इज उसको ज्यादा अपने को यूज नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट बेस आप लोग फॉर्मुले से याद रख लीजिए। और उसका पावर फैक्टर्स क्या होते हैं फॉर कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, और एलआर सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए, और एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है ना, और कोई डाउट किसी को? बेसिक बेसिक क्वेश्चंस खत्म कर लीजिए। डन?